अब मैं जब भी कमरे में आता तो बोलता मेरा एनिमल आ गया। मुझे हर दिन बोलते रहते मेरी सहेलियाँ तुझसे मिलना चाहती हैं, बोल रहे हैं सब पागल हो रहे हैं तेरे बारे में। आई सेड हाँ पापा, क्योंकि मैं आपका बेटा हूँ इसलिए सब मुझे इतना प्यार दे रहे हैं। सलमान की वजह से मैंने ये सब शुरू किया। मुझे सलमान ने फिल्म ऑफर की थी रेस, तो उसने कहा था मुझसे कि तू शर्ट उतारेगा। मैंने कहा मामू मैं कुछ भी करूँगा। मैं कोई आसान तरीका नहीं ढूंढना चाहता, क्योंकि जब आप मुश्किलों से गुजरते हो तो आपके अंदर एक ताकत आ जाती है जो आपसे कुछ अच्छा ही कराती है। Hi, this is Jaya and you're watching me on Bollywood Now. Today we are in conversation with Bobby Deol. Hi Bobby. Hi. Welcome to Bollywood Now. Thank you. Firstly, congratulations for Animal. Thank you so much. Process कर पा रहे हैं the amount of love. अभी तक ऐसा लग रहा है कि मैं सपना देख रहा हूँ। It's just very overwhelming. कितना प्यार मिल रहा है सब जगह से, प्यार, respect. God has been kind. I mean, when you work really hard, and every actor, we all work hard, but when that moment comes, the special moment that comes in your life, which you're waiting for, it is definitely surreal. It's just, I mean, it's amazing. You know, social media और हर जगह यही कहा जा रहा है कि कम बैक हो तो बॉबी देओल जैसा हो. You know, there are stars, there are actors, then comes the Lord Bobby. ऐसे ही चल रहा है पूरे सोशल मीडिया पर. No, I know. I mean, my fans have always stood by me from the time I started my career, and they've always supported me, and I just had to get the right kind of projects. And I always believe that hard work turns into luck, and that's what's happened with me today. बट आपको पता था कि इतना मैसिव सक्सेस हो जाएगा ये एनिमल? ये मैंने सोचा नहीं था, लेकिन I always had a gut feeling कि संदीप is my favorite director, and मुझे मालूम था कुछ भी बनाएगा अच्छा ही होगा। इतना अच्छा होगा ये कभी कोई इमेजिन कर भी नहीं सकता। सपने देख सकते हैं इस चीज़ के लिए, अरे मेरी फिल्म 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ 400 करोड़, लेकिन जब होता है तो समझ में नहीं आता क्या होता है। But how did it happen? You know, आपके पास स्क्रिप्ट आई and you said like yes मुझे करना है. मैं तो संदीप का फ़ोन आती है, मैंने दिमाग में यस बोल दिया था, क्योंकि आई वाज डाइंग टू वर्क विद हिम, और मुझे पता था कि अगर वो कुछ भी बनाएगा, कुछ भी रोल देगा, अच्छा ही होगा। और उसे जब मुझे मिला, उसने कहा 15 दिन है, मैं बोला कोई बात नहीं, 15 दिन हो गया, 20 दिन हो, आई न्यू दैट इट विल बी ग्रेट। रिएक्शन क्या था सबसे पहले तो आपकी वाइफ का, आपके बेटे का, एंड देन सनी सर तो आज जा रहे हैं देखने. I can see how happy they are in their eyes, how proud they feel about their father, their husband, because they've seen my journey up close and personally, and they know how much I've worked hard to reach where I have today. So basically, officially 2023 was officially the DEOLS year. Yeah, definitely you can say that. I mean, yes, it is. It has been. It started with actually Karan's wedding. In our lives, we got a daughter in our house who my brother always says has brought us so much luck. Then Papa's film came and the character he played, अगर कोई और करता वो character तो मज़ा ही नहीं आता. And he got so much love for that. And then भैया's गदर जब लगी तो हम हर दिन देख रहे हैं आज इतना कलेक्शन, अगले दिन आज भी इतना कलेक्शन, अगले दिन इतना 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 ऐसा हो रहा था. It was like we all thought we were dreaming in the beginning. I couldn't believe it. After 22 years, my brother has given such a huge blockbuster. So I was really happy, but I was happy just, it made me so happy. And then now I didn't know what will happen with Animal. I knew it would be received well, but the way it's been now, I see my brother and me, we just look at each other and we just like, what happened with us? तो कभी आप तीनों ऐसे बैठकर डिस्कस करते हैं कि हाँ यार हमने ये ईयर तो हमारा ही था बेसिकली? पापा ऐसा डिस्कस नहीं करते, हम यही डिस्कस करते हैं कि हम कितने ग्रेटफुल हैं हमारे फैंस के प्यार के लिए से और भगवान से कि हमें ये सब मिल रहा है इस वक्त. और पापा भी जब मेरे को मिलते हैं तो वो अभी तक उन्होंने देखी नहीं फिल्म, लेकिन जब वो सोशल मीडिया वो सब देखते रहते हैं, उनको शौक है. इंस्टाग्राम पे ही इज़ द बेस्ट आई थिंक. सोशल मीडिया पे उन्होंने आपके पिक्चर डालकर कही भी थी. हाँ वही तो, वो मुझे देख रहे हैं सब इतना वायरल हो रहा है तो बोल रहे हैं सब पागल हो रहे हैं तेरे बारे में. ही वाज सो हैप्पी. सो आई सेड हाँ पापा, क्योंकि मैं आपका बेटा हूँ इसलिए सब मुझे इतना प्यार दे रहे हैं. बट जब आपकी मम्मा ने देखा तो शी वाज नॉट रेडी एक्सेप्टिंग. कोई माँ अपने बेटे को ऐसे मरता हुआ नहीं देख सकती. एंड जब वो देख के बाहर निकली तो रो रहे थे. मैंने कहा क्यों माँ मत रो,
देख मैं सामने खड़ा हूँ तेरे, मैं तो एक्टर हूँ, मैंने कुछ रोल किया है, कुछ हुआ तो है नहीं मुझे। फिर अब इतने खुश हैं, फिल्म उनको बहुत पसंद आई और इतने खुश हैं कि मुझे हर दिन बोलते रहते हैं मेरी सहेलियाँ तुझसे मिलना चाहती हैं। उनकी एक सहेली की फ्रेंड दिल्ली से कल आई थी मुझे मिलने के लिए। और फिर अब मैं जब भी कमरे में आता हूँ तो बोलता मेरा एनिमल आ गया। फिर मैं चल के जा रहा होता क्योंकि हम एक साथ ही रहते हैं ना, मेरा एनिमल कहाँ जा रहा है। So she's very proud of me. She feels very happy. That's good. But अगर ये वाइस वर्सा हो जाए, धर्मेंद्र जी का भी रॉकी रानी में जब वो डेथ वाला सीन है, तो how did you watch that? I didn't know the story. I was like, I broke down because I couldn't see my father dying. और वैसे भी सब, when your parents start growing old, Yeah. that thought is more in your head because you don't want them to ever, you always want them to live forever. But we all have to die one day, but to see your father, I couldn't handle it. I just walked out because I couldn't control myself and I couldn't gather myself and become normal. Right. बॉबी, I would like to know कि अभी आपका फिलहाल क्राइटेरिया क्या है कोई भी स्क्रिप्ट को चूज करने से पहले? मेरा क्राइटेरिया तो क्लास ऑफ 83 से के पहले से ही था कि मैं ऐसे कैरेक्टर्स करूं जिनकी लेंथ बड़ी छोटी उसका कुछ फ़र्क नहीं था मुझे, बस उसमें सब्सटेंस हो, पावर हो, क्योंकि मैं कुछ कैरिकेचर्स नहीं करना चाहता। मैं हमेशा जब फिल्में देखता हूं तो मुझे मेरे भाई की फिल्म भी हो या किसी और की फिल्म हो, उनमें काफ़ी कैरेक्टर्स होते हैं और उनमें से भी मुझे कोई कोई ऐसे कैरेक्टर्स दिखते थे जो वुड लाइक स्टे बैक विद मी, एंड आई ऑलवेज टू से दैट जब मुझे ऐसे कैरेक्टर्स करने हैं जो आप साथ ले जाते हैं देखने के बाद में, एंड दैट्स बीन माई, आई ऑलवेज वांट, अभी मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसे रोल्स चूज़ करूँ जो मेरी कंफर्ट जोन के बाहर हैं, मुझे चैलेंज करें। मैं कोई आसान तरीका नहीं ढूंढना चाहता क्योंकि जब आप मुश्किलों से गुजरते हो तो आपके अंदर एक ताकत आ जाती है जो आपसे कुछ अच्छा ही कराती है। राइट। मैं आपका एक इंटरव्यू देख रही थी जहाँ पे यू सेड कि फेलियर हैज़ मेड मी, सो आई वुड लाइक टू नो अभी करंट स्टेटस, व्हाट डू यू थिंक? Current status is like I'm dreaming, I think. I work so hard, but सब लोग हार्ड वर्क करते हैं, मैं उनमें से एक हूँ। कितने हैं हमारे एक्टर जो स्ट्रगल कर रहे हैं अभी भी, तो I was one of them, and but the self belief I have now gives me the strength. I'm very focused. I feel all this makes me what I am as an actor, and I'm just really happy right now, but फिर भी समझता था कि क्या हो रहा है। But if you get a chance to give a message to your younger self, what would you give it? I would just say the same thing, don't lose your self-belief, be focused, be humble. That's very important. I tell this to all the actors out there who are struggling to get work, that never lose your focus, be positive and don't lose your self-belief. That's your strength, but stay humble. एनिमल में ना हमने आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन देखा है, ठीक है, जब दैट द फाइट सीन्स इन द लास्ट, वो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करना चाहेंगे, उसमें कितनी मेहनत लगी? एक्चुअली सलमान की वजह से मैंने ये सब शुरू किया। जब मुझे सलमान ने फिल्म ऑफर की थी रेस, तो उसने कहा था मुझसे कि तू शर्ट उतारेगा, मैंने कहा मामू मैं कुछ भी करूँगा। तो तब से मैंने फिटनेस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना शुरू किया, और आई थिंक फिटनेस इज़ रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज आपका सेल्फ बिलीफ को और भी बढ़ाती है, आपकी कॉन्फिडेंस को और बढ़ाती है। इट इज़ टफ बिकॉज यू कैन कॉन्स्टेंटली लुक लाइक दैट, you have to. I was working out. I've been working out since 6 years, really every day. Maybe one day off. But before the film, 4 months before the film, I started doing a lot of cardio and workouts. And then 2 months before, I started doing cardio twice. I used to do morning, then straight away after cardio, I used to work out. Then I used to do cardio in the evening, and I used to do for like 45 to an hour cardio, and then I used to work out for almost 45 to an hour. And we work out weightlifting. And then I controlled for 2 months. I didn't eat carbs. I only ate vegetables and protein. And so at that point, you think, okay, you're being tortured, but if no pain, no gain. And I knew the benefits of this. I knew that I had to portray that character physically and through my eyes, and it was very important. I would like to know that scene जहाँ पर आपने ग्लास रखकर जो डांस किया है, was that choreographed?
It was not choreographed because he wanted it to be like how people are at weddings. तो जब मैंने शुरू किया डांस करना तो बोलता नहीं नहीं ऐसे मत कर जैसे तू बॉबी देओल है. अब मैं the most difficult thing, you can play characters but when it comes to dancing it's very difficult not to take away your body language of your style of dancing. It's very difficult no matter what you do. So then I was shooting with Saurabh, who's playing my brother. I said तू बता तू कैसे करेगा तेरे को डांस करना इस गाने पर. तो उसने मेरे को एक दो स्टेप दिखाए. मैं बोला हाँ ठीक है. तो I try to do the way he did and then फिर मेरे दिमाग में एकदम से आया कि जब मैं छोटा था और जब पंजाब जाता था तो वहाँ सब all the men would get drunk and put their glass on their head and start dancing, balancing. Yes. So it was that thing, you know. So I said, let me just do that. And Sandeep loved that. And I didn't realize that it'll become such a viral thing. It's trend. You're seeing, you know, social media वगैरह पे subs कर रहे हैं. किसी की मम्मी अब डांट रही है. वो तो कुत्तों को भी डांस करवा रहे हैं बॉल के साथ. Yes, exactly. But see, it was not choreographed. No. That's great. I mean, that's great. Yeah, but it's just the music. It's just, I always say Sandeep Reddy Vanga. He's a genius. But you know, you haven't spoke one single word. But वो कितना impact कर गया लोगों पे. I know. और people have the complaint कि काश उनकी स्क्रीन टाइमिंग और होती. हाँ पर मुझे पता था before I did the film कि मेरा स्क्रीन टाइम इतना ही है and I knew in that screen time I'll be able to achieve a lot. पर इतना प्यार मिलेगा मैंने कभी सोचा नहीं था. Seriously. Anything you want to do and you haven't done yet ऐसा कुछ? There's so much. I've just begun, I think. There's so much to do. What's on your table next? I'm doing a web series. I'm doing some South films. I can't name them because they have to announce it before I can say it. But काफी अफवाहें तो आ चुकी हैं. इसमें कुछ सच्चाई है, कुछ झूठ है. But is going to debut, you know? My son will debut after 3-4 years, not now. He's just. वो भी अफवाहें हैं. नहीं, after 3-4 years. अभी नहीं. करेगा वो, लेकिन अभी नहीं. क्योंकि अभी तो he's not prepared. He needs to prepare himself. जल्दी मिलेंगे. Thank you so much for joining with us. Thank you. Hi, मैं हूँ बॉबी देओल और आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड नाउ पर.